Hi everyone, so we are live. So it takes a lot of time to actually understand that we are live because यहाँ पर इतना ज़्यादा लैग होता है ना YouTube पे. Yes, there you go. Okay, so let me adjust my camera. Okay, so कैसे हैं आप लोग? आज हमारा टॉपिक है फीटल फिजियोलॉजी. फीटल फिजियोलॉजी यानी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं बच्चे में ड्यूरिंग डेवलपमेंट इंट्रा यूट्राइन लाइफ एंड ऑफ कोर्स उसके सर्कुलेशन चेंजेस, उसके एंडोक्रिनल चेंजेस, उसकी मूवमेंट्स, ब्रीदिंग मूवमेंट्स कब आते हैं, यूरिन प्रोडक्शन कब होता है, एवरीथिंग. ओके, सो थोड़ा सा कैमरा रीएडजस्ट करना है. सो दैट इज इट. यस, देयर यू गो. ओके, सो आई एम डॉक्टर सोनल परिहार. आई एम योर ऑब्स एंड गायनी ट्यूटर. और ये क्लास आधे घंटे की है क्योंकि हम डेली सिर्फ आधे घंटे ही यूट्यूब पे सेशन करते हैं बिकॉज इवनिंग में आज 2 स्पेशल क्लासेस हैं. सो अन अकेडमी नीट पीजी गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम आ रहा है. 4 जून को FMG है, 21 मई को अभी तक फिलहाल नीट पीजी पोस्टपोन नहीं हुआ है. सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. और क्विकली वी विल फिनिश 20 मई तक, 20 मई तक वी विल फिनिश ऑल द टॉपिक्स. ठीक है, कंबाइन करके एक साथ लगातार तो क्लासेस नहीं होती है, बट हाँ अभी तक 16 मार्च से, जब से मैंने ज्वाइन किया 16 मार्च से, तब से लेके अभी तक सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं कर रही हूँ, चाहे वो स्पेशल क्लास हो चाहे वो प्लस क्लास हो. तो जिन लोगों ने प्लस क्लास मिस करी है आप उसको पे करके वापस देख सकते हैं क्योंकि वो टॉपिक्स हम स्पेशल में नहीं कर रहे हैं और जो स्पेशल में कर रहे हैं वो प्लस में नहीं कर रहे हैं. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग सो दैट आप लोग जो बच्चे अन अकेडमी में पढ़ रहे हैं उनको सब कुछ एक साथ मिल जाए. सो दैट्स मी डॉक्टर सोनल परिहार, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स. आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट मेन चैनल है फॉर द पेशेंट्स और दूसरा चैनल है डॉक्टर सोनल्स ट्यूटोरियल्स. अगर आपको छोटा छोटा कुछ पढ़ना है मेरे से, एनी टॉपिक विच नीड्स क्लैरिफिकेशन, जिसमें 4-5 मिनट का आपको वीडियो चाहिए, तो जस्ट लेट मी नो. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो मेरा और उसमें मुझे बताओ कि मैडम इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं हॉस्पिटल में बैठे बैठे बना दूंगी. ठीक है, आई एम वर्किंग इन जोधपुर एज अ कंसल्टेंट इन माई ओन प्राइवेट हॉस्पिटल. नाउ दिस इज द रिविजन बैच जो कि 140 दिन घंटों का हो चुका है. लेट मी, योर इज क्लोज. सो अप्रैल 20, मई 20 से लेके ये चालू हुआ है. राइट, अप्रैल 20 से मई 20 तक ड्यूरेशन क्या है. ये नीट पीजी एजुकेटर रिवीजन बैच है जिसमें कि ऑफकोर्स मैं भी हूँ और 20 मई तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे लगातार. एंड निमोनिक्स बैच डॉक्टर निकिता का, ये भी अप्रैल 20 से मई 20 का है. प्लस टेस्ट कैलेंडर, प्लस यानी कि पेड है, फ्री नहीं है. नाउ दिस इज द टेस्ट कैलेंडर जो कि आपको दिख रहा है. 23 अप्रैल जो कि जा चुका है, 27 आने वाला है, 28, 29 मेरा वाला है OBGY. दिस इज INICT लेवल, ये नेक्स्ट 2023 है. आप लोगों को पता है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में जो एग्ज़ाम है दैट इज़ द लास्ट नीट एग्ज़ाम जिसको कि नेक्स्ट 2023 बोला गया. और उसके बाद से 24, 25, 26, 24 ऑनवर्ड्स आप लोगों के 2 पैटर्न हो जाएंगे, 2 पार्ट्स में नीट पीजी डिवाइडेड हो जाएगा जिसको कि नेक्स्ट बोलेंगे. 1 बिफोर इंटर्नशिप, 1 आफ्टर इंटर्नशिप. ठीक है, उसका पैटर्न क्या रहेगा वो बाद में पता चलेगा. दिस इज द प्रीवियस 4 ईयर्स क्वेश्चन बैंक जो कि रिवील हो चुका है, रिलीज हो चुका है. आपको इसको खरीदना है. खरीदने के लिए हेल्पलाइन नंबर 85 पे कॉल करिए और इसको आप अवेल करिए कि कैसे ख़रीदना है. हर चीज़ में जहाँ भी आपको डिस्काउंट चाहिए वो डॉक्टर सोनल कोड है. अभी 4 दिनों तक के लिए बच्चों, अभी आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. 25 तारीख से 28 तारीख तक इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू परचेज बिकॉज अभी फिलहाल नॉर्मली 10% डिस्काउंट होता है, अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है. बहुत से बच्चों ने इसको अवेल किया, कल भी खरीदा. अभी 3 दिन बाकी हैं, 26, 27, 28 इसको अवेल करो. ठीक है, आज मैं इसको स्टोरी में डालती हूँ सो दैट जितने बच्चे इसको देख पाएँ, इसको सुन पाएँ, समझ पाएँ, ये करें. देन नीट पीजी का मॉक टेस्ट आ रहा है 1 मई को. आई थिंक दिस विल बी द लास्ट टेस्ट फॉर यू, मे बी एक और हो सकता है. 21 मई एग्जाम से पहले वी आर ट्राइंग टू गिव यू मॉक टेस्ट जिसमें कि आप अपना रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हो. रैंक से ज़्यादा यू विल गेट द आंसर्स वीडियो के थ्रू, you will get the answers and of course you can always check your knowledge. रैंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रैंक से आई मीन यू डोंट हैव टू गेट डिस्टर्ब बाय द रैंक, बट द मेन थिंग इज आपकी प्रैक्टिस. 9 बजे संडे को 1 मई को ये सब न्यू ऑफर्स आ रहे हैं. डेडिकेटेड सेक्शंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. हमारी जो प्लस टेस्ट रेटिंग्स हैं यानी कि जो हमारी प्लस क्लासेस हैं उसको रेट 4.57 आउट ऑफ 5 मिला. दैट इज ऑलमोस्ट 5 आउट ऑफ 5. सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड यू आर गिविंग अस गुड मार्क्स एंड गुड रैंकिंग. सो दैट्स वेरी नाइस एंड hopefully we will do well again in the exam
और हम फटाफट जो पिछले वाले टॉपर्स हैं उनसे भी आगे निकलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द लाइट सब्सक्रिप्शन जो बहुत बच्चों ने लिया है। आई एम टेलिंग यू एवरी डे, ये ओनली 2400 का है, जो कि इसका बेस रेट है। 10% डिस्काउंट के बाद ये बन जाता है 2160, और इसमें 10% डिस्काउंट और डाल दो, यानी कि 20% डिस्काउंट जो अभी 4 दिन का ऑफर चल रहा है उसमें ऑलमोस्ट 480 माइनस हो जाएगा। तो ये कितना रह जाएगा, ये आपको सिर्फ इतने का पड़ेगा। इतने में आपको पूरे 19 सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज मिलेंगे। गो एंड चेक इट आउट। इतने सारे एमसीक्यूज आपके पास आ जाएंगे, तो यू विल हैव समथिंग टू प्रैक्टिस बिफोर 21 मई। लॉन्चिंग एमबीबीएस प्रॉफ 1 यानी कि एनाटॉमी, बायोकेम एंड फिजियोलॉजी के 3 सब्जेक्ट्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन सीरीज प्लस प्लेटफॉर्म अप्रैल 6 ऑनवर्ड्स एंड विद टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। तो ये प्लस प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो चुका है। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको पता है, दिस इज ओनली एन अकेडमी, जिसके कि रेट्स हम लोग हर बार बताते हैं और हर बार चेंज भी होते रहते हैं। आइकॉनिक इज प्रेप लैडर एंड एन अकेडमी टुगेदर। ज़्यादातर लोग आइकॉनिक की तरफ जाते हैं बिकॉज उनको एक ही सब्सक्रिप्शन में दोनों ऐप मिल जाते हैं, तो खरीदने की जरूरत ही नहीं और कुछ, ठीक है। देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द लास्ट ईयर टॉपर्स। स्पेशल क्लास जो हम आज इवनिंग में करेंगे, 2 क्लासेस एक 7 बजे है, ये 45 मिनट्स की है। नेक्स्ट क्लास 8 बजे है, ये शायद आधे घंटे की है या 45 मिनट्स की है, वी कैन चेक इट आउट डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट एंड द टॉपिक इज फीटल फिजियोलॉजी, ठीक है। इंटरैक्टिव क्लास है, फ्री क्लास है, स्पेशल यानी कि फ्री क्लास है। यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड डॉक्टर सोनल, जिससे कि क्लास अनकोड हो जाएगी। एजुकेटर्स ऐप ने सॉरी लर्नर्स ऐप पे जाना है आपको, अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे, ठीक है। देन नीट पीजी का ये जो बैच है मार्च 30 से मई 15 ये बन चुका है, अब खत्म हो रहा है। 1.5 महीने का बैच है। वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू आउट, इसको परचेज करो। एंड एफएमजी का 2 महीने का बैच बन चुका है, जो कि 30 मई तक चलेगा, बिकॉज इनका एग्जाम 4 जून को है। सो ऑल द ट्यूटर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है ना। वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। हाय रवि, हाय ओके। सो N1, द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द फीटल एरिथ्रोपोइसिस एक्सेप्ट The following are related to the fetal erythropoiesis except, आपको इसका आंसर देना है by writing the number of the question. The following are related to the fetal erythropoiesis except in the embryonic phase the erythropoiesis is first demonstrated in the primitive mesoderm. By 10th week the liver becomes the major site. Near term the bone marrow becomes the major site. At term 75 to 80% of the hemoglobin is fetal type. Okay, so इसमें से क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ गलत है except. So we have 5 people watching. आज आप लोगों की क्वांटिटी कम क्यों है? डेली 14-15 लोग होते हो। ये टॉपिक पसंद नहीं आया आप लोगों को, या फिर यू आर बिजी डूइंग समथिंग एल्स? सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इस पर, है ना। इट्स अ वेरी बेसिक टॉपिक। फटाफट करते हैं एंड विल फिनिश, राइट। कम ऑन गाइस, आंसर करो। क्या चीज़ गलत है? 10th वीक तक लिवर बिकम्स द मेजर साइट। ओके, यू थिंक डी इज रॉन्ग? No, D is actually right because 75 to 80% hemoglobin at birth, at term sorry, is fetal type, ठीक है। HbF ये हम आज शाम को पढ़ेंगे। 10th वीक में लिवर मेजर साइट होता है एरिथ्रोपोइसिस का, बाद में बोन मैरो टेक ओवर कर लेती है। यहाँ पर क्या गलत है? इट इज़ नॉट प्रिमिटिव मेसोडर्म, द आंसर इज ए, इट इज़ एक्चुअली योग सैक जो एक्टोडर्मल टिश्यू होता है, ठीक है। तो इट इज़ योग सैक। एपीब्लास्ट होते हैं ना, एपीब्लास्ट जहाँ पर जर्म सेल्स जहाँ से माइग्रेट करते हैं। सो दैट इज़ द टाइम, दैट इज़ द ऑर्गन और यू कैन से द साइट जहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, N2, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग HbF except. All are true regarding HbF except higher affinity for oxygen, binds less to 2,3 dpg, more carbonic anhydrase and resistant to acid. इसमें से क्या चीज़ गलत है? For the fetal hemoglobin, जो कि आज हम पढ़ेंगे, the difference between fetal hemoglobin and adult hemoglobin and how we differentiate between fetal hemoglobin by which test and maternal hemoglobin, and how we differentiate whether it was fetal RBC, not hemoglobin, fetal RBC or maternal RBC. Question number 2. Okay, so we have one answer from Rusha Day. Okay,
So where are the people who normally watch my MCQs every day? Because अभी तो मेरे को नाम याद हो गए. So we have Dr. Humaira. I think आपने पहली बार मेरा attend किया है ये session. And Rusha also, I can see you are new to my session. Because हम लोग इतने 1-1.5 महीने से सेशंस कर रहे हैं and the people who normally attend are not here today. Okay, anyway, all are true regarding HbF and that is true. Your answer is right. It is C, that is more carbonic anhydrase. That is the wrong one. Everything else is right. Fetal sex can be detected by ultrasound at what gestation? 14, 16, 18 or 20? Very easy because the options that they have given clearly पता चल रहा है कौन सा होगा. सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके हमारी कंट्री में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं. अभी लाइक रिसेंटली दे हैव कॉट अ डॉक्टर इन राजस्थान हु इज़ डूइंग दिस फॉर सो मेनी ईयर्स एंड ही हैज़ बीन कॉट 5 times and it is just he just doesn't listen. So we have such black goats in our profession also who kind of dirty the entire profession, and because of them the normal practitioners, the genuine practitioners, we suffer. Okay, question number 3, fetal sex can be detected. Top chat, I can see 4 people watching. Come on, very easy. Fetal sex can be detected by ultrasound at okay, so it's only one person answering. Rusha, you think it is C? Fetal sex can be detected at 18 weeks. B. Okay, anyone else? Kalpana B, Abdul Rahman C. Guys, fetal sex can be easily determined quite early. Come on, it is 14 weeks. In fact, it is 11 to 12 weeks पे sex पता चल जाता है. 14 weeks इसलिए लिखा है, कभी कभी टेस्टिकुलर डेवलपमेंट में टाइम लग जाता है और इनफैक्ट टेस्टिस तो पहले डेवलप होती है, ओवरी बाद में डेवलप होती है, बट एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल्स में थोड़ा सा अप डाउन होता है. तो 12 weeks to 13 weeks इज द आंसर, बट इसमें 14 weeks है तो 14 weeks को ही हम लेंगे. डॉक्टर हुमायरा, यस यू आर राइट, इट इज. कल्पना, नाउ यू आर राइट, इट इज ए. ओके, so we have 7 people now. The percentage of HbF at birth. What is the percentage of fetal hemoglobin at birth? Tell me. और ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है. Good morning, Dr. Giri. So I was missing my people who always watch my session. We had only 2 people to start with. और ये दोनों दे आर न्यू. रूशा इज, तो हुमायरा तो आई थिंक आप आ चुके हैं पहले, बट रूशा इज न्यू. सो या, वेलकम बैक डॉक्टर गिरी. रूशा, यू आर आंसरिंग डी. ओके, anybody else? Kalpana, yes, it is right, it is D. Okay, it is 9, no, it is actually 70%, I'm sorry, it is 70%. Let me read out the answer. Fetal hemoglobin at birth is 70 to 80%. Adult hemoglobin is only 20%. And around 6 to 12 months after birth, once the baby is 12 months old, HbF सिर्फ 1 to 2% रह जाता है. So from 70 it comes to 1 to 2%. This change is mediated by the glucocorticoids and it is irreversible. All right? So it is 70%. Yes, you're right. Median umbilical ligament is a remnant of. Can somebody tell me the difference between median and lateral umbilical ligament? Median umbilical ligament and lateral umbilical ligament. I'm asking you this because even I'm confused of it. I need to research because मैंने 2 अलग-अलग books में से पढ़ा है and both the books are telling me different. So first of all, you tell me which particular vessel forms the median umbilical ligament. Dr. Giri, you were late. I was a bit late, so watching in 2 times. Okay, right. That's fine. So, see, you are also getting confused, Kalpana. I am also confused because your DC Datta says it is umbilical artery, but the other book that I'm following is one of the famous books that you follow for NEET PG, and it is saying Eurecus. So, according to this book, it is the lateral umbilical ligaments which are formed by the, oh my god, it is just sweaty hands. So, it is Eurecus in this book. The umbilical artery, according to this book, forms the lateral umbilical ligament, and the median umbilical ligament is the remnant of the Eurecus. So, I'm slightly confused. Let me refer to an embryology book because these gynec books are confusing me, and in the evening I will tell you in the special class what is exactly happening inside the body. Alright, so it is actually D here. Right, now urine production by the fetus at term. What is the urine production rate
by the fetus at term. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक पे नहीं आएंगे, बट कुछ आ गया तो आपको लगेगा यार पढ़ लेते तो अच्छा होता, 2 क्वेश्चन भी आ गए तो, बिकॉज दिस इज समथिंग यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि बच्चा कब क्या बना रहा है, कितना यूरिन बना रहा है, उसकी कितने वीक्स पे क्या शुरू हो रहा है। तो ये तो आई हैव मेड इट इन अ टेबुलर फॉर्म टुडे इन द इवनिंग, मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप उसका फ़ोटो ले लेना, यू कैन डाउनलोड इट, सो जस्ट डू इट, है ना, इसको याद करना ही पड़ेगा। यूरिन प्रोडक्शन बाय फीटस एट टर्म, okay, so everybody is saying D, okay, तो आंसर इज C, 27 ml per hour. So ये टॉपिक आप लोगों का प्रिपेयर्ड नहीं है, so you need to really attend the classes today in the evening, ठीक है, we have 2 classes in the evening. So let me just check in the theory, MCQs में तो आपको यही आंसर दिया गया है, okay, yes, so it is 27 ml per hour, okay. ओके, आई गॉट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग जो अभी मैं कह रही थी ना कंफ्यूजिंग है. सी देर आर 2 थिंग्स. व्हाट डिड आई आस्क यू इन दिस? मीडियन. सो इट इज मीडियन, देन इट इज मीडियल. Haha, now I got the answer. And now it is lateral. Okay, so median, that is N, is coming from urachus. It is the remnant of urachus. Okay, medial, that is L, is coming from umbilical artery. Okay, so that is what you were getting confused. And lateral comes from inferior epigastric artery. ओके, बट इन योर DC दत्ता लेटरल अम्बलाइकल लिगामेंट को अम्बलाइकल आर्टरी से जोड़ा गया है. सो ये मुझे अभी कंफ्यूज कर रहा है, सो आई नीड टू चेक. बट द बुक दैट आई एम फॉलोइंग राइट नाउ फॉर MCQs, उसमें मीडियन इज फॉर यूरेकस, मीडियल इज फॉर अम्बलाइकल आर्टरी, लेटरल इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. एंड आई एम श्योर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड अम्बलाइकल आर्टरी एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में होंगी, बिकॉज अम्बलाइकल आर्टरी गोज फ्रॉम द प्लेसेंटा, एंटर्स द अम्बलाइकस, right, and it is basically carrying all the deoxygenated blood from the fetus to the placenta. तो जब placenta umbilical cord कट गया तो ये जो remnant होगा इसका वो यूरेकस और inferior epigastric artery ही बनाएगा. So most likely they are all linked together. Okay, so median, medial and lateral. Okay, so that is it. And what is B6? What did you write, Dr. Giri? B6? I didn't understand B6. So it is 27 ml per hour. So that is the 6th number question. You are saying B. No, it is C. First stimulant for production of testosterone from the fetal testis. So which is the hormone which gives a signal to the testes of the fetus. टेस्टिस डेवलप हो जाती हैं 7 to 8 वीक्स के अराउंड. तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का स्टिमुलस कहाँ से आता है? LH, FSH, HCG या फिर स्टेरॉइड्स. कौन इसको स्टिमुलस देता है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए? Let's quickly finish the 15 questions. I just have 15 questions for you. Okay, we have one answer from Kalpana. Anybody else? Okay, so it is HCG. Yes, because इतनी जल्दी 8 वीक्स के अराउंड, 7 to 8 वीक्स के अराउंड जब टेस्टिस बनते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, उस समय LH, FSH कहाँ से आएंगे? सो इट इज़ बेसिकली HCG. ओके. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फीटल पैंक्रियाज बाय. तो पैंक्रियाज कब इंसुलिन ग्लूकागॉन बनाना शुरू करता है? ये तो सिर्फ आपको रटना ही है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, है ना. देयर इज नथिंग दैट आई कैन टेल यू कि ऐसे याद करो या वैसे याद करो. तो इसको टेबुलर फॉर्म में आज हम शाम को करेंगे कि हार्मोन्स का क्या टेबुलर फॉर्म रहता है, एंड उसका निमोनिक बना के वी विल ट्राई टू डू इट. ओके, सो अमैल्गमेट is answering C. Anybody else? A. So at 11 weeks, then you're saying 9 to 10 and glucagon at 8. Okay, so you're changing your answer, amalgamate. जो पहला आंसर होता है ना वो सही होता है. amalgamate, you were right. It is insulin at 9 to 10 weeks
and glucagon at 8 weeks. So never change your answer. Don't get confused with the others answers because you were right. Okay, so जो चीज़ पहली बार स्ट्राइक हुई that should be the answer. जनरली ऐसा ही होता है, हम जब उसको चेंज करते हैं तब गड़बड़ होता है. ओके, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीटल ग्रोथ. फीटल ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, पैराथायरॉइड हार्मोन या फिर थायरॉक्सिन. और एक ऑप्शन इसमें नहीं है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है फीटल ग्रोथ के लिए. दैट आई विल टेल यू लेटर. वो हमने पढ़ा था व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट द प्लासेंटल हार्मोन्स, प्लासेंटल फीटल मेम्ब्रेन्स. Okay, question number 9 guys, 10 minutes left. नहीं आता? Please write the question number. No, B C B C B C B C करके I just don't know. कोई B लिख रहा है, कोई A लिख रहा है, कोई C लिख रहा है. Rusha, it is B according to you. Giri, it is B according to you. Okay. Anybody else? Okay, so what is the other hormone which is responsible for growth? That is HPL. HPL is human placental lactogen. As the name indicates, lactogen, it is not going to do anything with the breastfeeding. कोई prolactin वाला action नहीं. It is responsible for fetal growth. And the answer is insulin, which is right. It is not thyroxine. It is B, insulin. Okay. What is the main product of fetal adrenal gland? मेन प्रोडक्ट, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. एक मेन प्रोडक्ट होता है फीटल एड्रिनल ग्लैंड का जो कि नॉर्मली मदर नहीं बनाती है. ओके, मदर नहीं बनाती ही नहीं, जो कि नॉर्मली प्लासेंटा में नहीं बनता है. ओके, फीटल एड्रिनल ग्लैंड का मेन प्रोडक्ट, एंड दैट इज द मेन प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इवन द एडल्ट्स एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कि ओवरी में नहीं बनता है. दैट्स अ हिंट. अगर आपने मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली पढ़ी हैं, हॉर्मोन्स वाले चैप्टर्स एंड लेक्चर्स आपने सुने हैं, देन यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. क्वेश्चन नंबर 10, कॉर्टिसोल. ओके, एनीवन एल्स? Rusha, you are answering which question? Are you answering this question number 10? Okay. Yes, it is DHEAS, that is dihydroepiandrosterone sulfate. तो ये क्या होता है DHEAS? ये प्रोड्यूस नहीं होता है प्लासेंटा में. दिस गोज टू द प्लासेंटा, गेट्स कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रायोल एंड ईस्ट्राडियोल, और ये सब जरूरी होते हैं ड्यूरिंग लेबर. ड्यूरिंग लेबर कॉर्टिसोल चाहिए होता है, DHEA, जो कि प्लासेंटा में जाके ईस्ट्रोजन बनता है, एंड देन द रेशियो ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इज डिस्टर्ब्ड एंड दैट लीड्स टू मोर प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड गैप जंक्शंस एंड दैट लीड्स टू इनिशिएशन ऑफ लेबर. ओके, previous year questions. Fetal kidneys start producing urine by which month? N1, question number 1. Okay, Rusha, yes, you were right. It was B. Kindly write question number 1, or you can just write 1-A, 1-B, whatever, because I know it is 1. You don't have to write N1, just write 1 and then the answer. Ma'am, if the female primary with history of seizures and give phenytoin, what fetal effects can we see? See, in a primary gravida with history of seizures and give phenytoin, depending upon when you are giving phenytoin. Phenytoin is as such safe in pregnancy. It is not sodium valproate, right? Sodium valproate is unsafe because that can lead to NTDs. But phenytoin as such, Epsolin, which is the name normally given, the trade name, it is quite safe. And we normally tell the patient that if she is taking epileptic drugs throughout her pregnancy, she needs to be under monitor by the physician who is treating her, because the physician should know that she is pregnant. Initially जो 3 months होते हैं, when the organogenesis is happening, she should avoid taking sodium valproate and other, I think even carbamazepine, you might be knowing well. These are the ones. The most notorious is sodium valproate. So phenytoin is still okay. Okay. Okay, so the answer here is somebody saying 4 month, 5 month, then 3 month. It is actually 3 months, 12 weeks. Yes, 12 weeks is right. Amalgamate, it is 3 months. Okay, fetal kidneys start producing urine by 12 weeks. That is the reason why amniocentesis is done after 14 weeks. क्योंकि 12 weeks से 14 weeks के अंदर इतना fluid बन जाता है कि we can put the needle and aspirate. ठीक है, 12 वीक से पहले आप जब देखेंगे डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं तो वो सैक ही पूरा ऑब्लिटरेट नहीं हुआ होता है. पूरी एमनियोटिक कैविटी जो पूरा यूट्रस है उसके अंदर बच्चा यहीं पर होता है, तो सैक इज स्मॉल. बाय 12 वीक्स द एंटायर सैक ऑक्युपाइज द एंटायर यूट्राइन कैविटी.
देन यू कैन पुट अ नीडल, बिकॉज बच्चा यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर बच्चा यहाँ है और इतना सा फ्लूइड है। अभी 12 वीक्स के बाद विद इन 2-3 वीक्स 14-16 वीक्स के अराउंड जब हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो पूरा सैक जो है एमनियोटिक सैक दैट हैज ऑब्लिटरेटेड द यूट्राइन कैविटी एंड द एंटायर यूट्राइन कैविटी इज फुल ऑफ फ्लूइड. ओके, सो इट इज 12 वीक्स. Fetal stage starts at, it's a JIPMER question 2004. Fetal stage, we know it is initially an embryonic stage, then comes the fetal stage, right? See, कब start होती है fetal stage? उसके पहले वो zygote होता है. Zygote, embryonic and fetal, ये भी मैं आपको शाम को बताऊंगी. Okay? Person on phenytoin and a fluid is 2.7 at 39 weeks, hypotension with normal fetal movement. Is it an indication for cesarean? See, yes, because hypotension may be corrected by the anesthetist, but 2.7 AFI is very, very low. Even it is like almost nil. It is severe oligohydramnios. So why would you subject this patient for a normal delivery? You will be lucky if you can find a baby who is good enough, who can come out and breathe, because it's a very, very low liker. So just go for cesarean. Yes. Okay, 9th week 2A, fetal state starts at 9th week, and that is true. That is right, and we will read this in the evening. Lifespan of the fetal RBC approximates how much? What is the lifespan of the fetal RBCs? With just 2 more questions left and just 3 more minutes left. So we will finish all the 15 questions. Okay, so somebody is saying A, somebody is saying C. It is actually 9 weeks. It is not 6 weeks. 9 weeks from the post-fertilization, or we can say 11 weeks from the LMP. Okay, I hope I'm right. I'll correct that in the evening if I'm wrong. Okay, Rusha Day, you're saying 100 days lifespan of the fetal RBCs. Question number 3. Okay, another answer. All are saying C. It's actually marked as 80 days here. The lifespan of the fetal RBC, they're saying it is 80 days. There might be a small overlap, so you have to choose 80 rather than 100. Might be 80 to 100 days, or maybe 80 to 90 days. Where did you read 100 days? I don't know. But in your book, it is marked 80 days. Okay. So the lifespan is less. 120 days is for the RBCs, the adult RBCs. So the answer is 80 days. Okay. So yeah, maybe you have read 90 days, 80 to 90, so you have to select 80, right? So they have selected 80. So we have to go with the book. Then, second last question, AIMS question 2013. Which test differentiates maternal and fetal blood cell? Okay, so they are talking about RBC. They are not talking about hemoglobin. Mind it. Which test? AP test, या फिर Cleo-Herbert के, या bubble test, या Lilly's test? I think the confusion will be between 2. And you need to know which one. Okay, so it's question number 4. B. Okay, yeah, that is KB test. KB test is a quantitative test. This will tell you how many RBCs. It is not a qualitative test, it's a quantitative test, and that is used to determine how much hemolysis has happened. Okay, see if we can calculate. Ligamentum teres, the last question from COMED. I don't know what exam COMED is. What exam is COMED? So it's written COMED anyway. 2006. Ligamentum teres is formed after obliteration of umbilical vein, ductus venosus, ductus arteriosus, or hypogastric artery. AP test is used for hemoglobin differentiation, because we just read that the hemoglobin is resistant to alkali, the fetal one. The adult one is getting denatured and broken down by the alkalis and acids. So that is AP test, and we will discuss that in the evening. Okay, so you can check whether the bleeding coming from the vagina, that is fetal or maternal, whether it's vasa previa or placenta previa. Okay, 5. B, C, guys, आप लोग का ये chapter ना, you haven't prepared this chapter well. Ligamentum teres is vein, obliteration of umbilical vein. Okay, it is not ductus venosus. Ligamentum teres of the liver is left umbilical vein. Ductus venosus is forming ligamentum venosum, not ligamentum teres, and ductus arteriosus is forming ligamentum arteriosum.
ओके, सो इट इज़ अ वेन विच इज़ फॉर्मिंग टेरिस. सो टेरिस वेन, अम्बिलिकल वेन आपको पता है सबसे पहले लिवर के थ्रू जाती है, वहाँ पर जाके पोर्टल वेन से मिक्स होती है. तो पोर्टल वेन लिवर से आती है, तो लिगामेंटम टेरिस, बिकॉज टेरिस इज अ लिगामेंट ऑफ द लिवर. ओके, सो दैट इज हाउ यू विल रिमेंबर एंड दैट इज इट गाइज. इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं मुझे अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर के, एंड देन इन द इवनिंग वी विल हैव 2 classes so that we can finish them, and I will try to make some mnemonics for you so that it becomes easy, अगर बन पाए तो. अदरवाइज यू हैव योर ओन वे टू रिमेंबर. ये चार्ट छोटी छोटी अपने चारों तरफ रूम में चिपका दो जहाँ बैठ के पढ़ते हो, सो दैट यू कीप रिमेंबरिंग. ओके, और जब क्या होता है कि व्हेन यू हैव टू रिमेंबर, अच्छा लिवर से 10 वीक्स पे होता है, किडनी से 12 वीक्स पे होता है, अच्छा पैंक्रियास से ऐसे होता है, तो आप बॉडी के अकॉर्डिंग याद करो. लिवर यहाँ रहा, किडनी यहाँ है, पैंक्रियास थोड़ा नीचे आ गया, तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर. अच्छा 10 वीक्स पे ये था, फिर 12 वीक्स पे यहाँ आ गया, फिर 14 वीक्स पे हार्ट आ गया. तो इस तरह से आपको रिमेंबर करना है. दैट इज ओनली द ओनली वे यू रिमेंबर, एंड यू हैव टू लर्न इट विद योर फ्रेंड. याद कर करके सुनाओ एक दूसरे को, है ना. दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर. ओके, सो दैट्स इट. सी यू ऑल इन द इवनिंग. शाम को 7 बजे. इस महीने मेरी सारी क्लासेस 7 बजे स्टार्ट होंगी. नेक्स्ट मंथ से वी विल प्रीपोन इट सो दैट वी फिनिश बाय 5:30 बिकॉज सम वन ऑफ यू हैज़ रिक्वेस्टेड, और मैं भी यही करने वाली हूँ. नेक्स्ट मंथ से वी विल डू 1 मई से वी विल स्टार्ट, या 2 मई से विल स्टार्ट इन द इवनिंग. 4 to 6 के बीच में सब खत्म कर देंगे. ठीक है.